हेलो एंड वेलकम भाई और बहनों टू कैल्शियो चर्चा। वी आर बैक आफ्टर अ वाइल और बैक फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट गेम यार भाई लोग, मतलब कॉन्फ्रेंस लीग फाइनल। फियोरेंटीना ओलंपियाकोस, ऑफ कोर्स हम लोग तो फियोरेंटीना के लिए चीयर करने वाले हैं। आई नो कौस्तुभ की सॉर्ट ऑफ फेवरेट क्लब है, इटालियन फेवरेट क्लब है फियोरेंटीना। तो पहले कौस्तुभ से स्टार्ट करता हूँ यार। बहुत बड़ा गेम फियोरेंटीना के हिस्ट्री में, स्पेशली इतने फाइनल्स देखे नहीं है फियोरेंटीना ने। बट जनरली क्या क्या फीलिंग है यार, मतलब क्या what do you make of this whole moment for Fiorentina? Because हमें पता है इटालियानो छोड़ के जाने वाला है Fiorentina, and of course we don't know exactly कौन आएगा, but yeah, this could be his last hurrah. Hmm. It will be a perfect send off if he can win a trophy. So what's your general feeling about this before we get into the whole thing? I think uh, even though ये storyline है, obviously there's a plot कि Italiano leaving with a trophy which will cement himself in history, so to speak. But even if you look at Fiorentina की अपनी story in isolation, Hmm. they've been through two different financial disasters over last 30 years, 40 years. Hmm. वो भी Yeah. which is why they were in administration. फिर वो lower division से वापस ऊपर आए. Yes. And then when I started to follow them much more closely, वो actually relegation में थे. हाँ. Yeah. I mean, Yeah. be it Yakini और Oh Prandelli boy. भी था, मतलब second stint obviously. हाँ. वो कभी ऐसा लगता नहीं था कि कोई आइडेंटिटी है. And I said यकीनी के भी दो stints थे obviously, Hmm. annoyingly enough. And वो कभी लगता नहीं था कि ये क्लब वापस यूरोपियन फुटबॉल वगैरह तक जा पाएगा. बट अभी जैसे मेंशन करा कि इटालियानो, आई रिमेम्बर इटालियानो का फर्स्ट गेम एज फियोरेंटीना मैनेजर Hmm. अगेंस्ट आई थिंक रोमा. दैट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम आई सॉ फियोरेंटीना हैव अ टैक्टिकल प्लान. एंड वो Yeah. इटालियानो का टैक्टिकल सेटअप फर्स्ट मैच से दिखा था. ऑल्दो दे लॉस्ट 3-1, 10 मैन Hmm. थे, आई थिंक रोमा भी लगभग एंड में 10 मैन से खेल रहे थे. Hmm. बट स्टिल आई मीन उसने अपना इंटेंशन फर्स्ट मैच से दिखाया था. And that's like the most promising Fiorentina project I've seen in over a decade, I would Hmm. say. Or with Prandelli era, Montella era, 100%. were nice. Hmm. But I think stylistically, the current style of play is miles beyond what Hmm. apne Montella or Prandelli could do. हाँ. So Yeah. it matters a lot to the city. And Fiorentina are not a small club. Hmm. और वो हिस्टोरिकली कल्चरली काफी इम्पोर्टेंट जगह भी है Hmm. इटालियन कल्चर के लिए. Hmm. So it will mean a lot to Italy as well, not just Yeah. club के अपने fans. Mm-hmm. बराबर. Definitely. But I hope the screen is visible. First things first, Kaustubh. I hope. हाँ हाँ यार. And by the way, of course, I didn't get into too much of an intro, but ये Kaustubh भाई का profile है, Twitter profile at @cos_Pandey17. He, as I said, कि as I've said before, कि he writes for a lot of Italian outlets, especially Get Italian Football News, जहाँ वो Italian football के बारे में अलग-अलग stories, transfer news ये वो cover करते रहते हैं. And by the way, Kaustubh, मैं तो like I agree with you full on कि Florence as a city, especially what you said, कि they have obviously footballing wise they've seen good things, but off late बहुत they need this breakthrough. I feel एक identity establish करनी है उन्हें, जैसे रोम ने की है रोमा के साथ. Of course, the Roma section, not the Lazio section. But next, I'll come to Mittul bhai. यार Mittul, let's get straight into it with the questions. First of all, again, before I get to Mittul, ये Mittul भाई का account है, the Calcio guy @Calcio fan Mittul. अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया उसको भी कर दो भाई. He writes articles about Italian football as well every now and then, and he keeps tweeting often more, and he also brings up a lot of interesting things to our notice. So with that being said यार, भाई लोग आ जाते हैं इस पे. मित्तुल, ओवर द तो ये ब्रीफ ही रखेंगे जनरल चीजें. लाइक एक चीज मुझे बता यार, इटालियानो ने ना ओवर हिज 3 स्पेल्स, एज कोस्तो भाई राइटली सेड, ही स्टार्टेड फॉलोइंग फियोरेंटीना ड्यूरिंग देयर रेलेगेशन स्पेल. पर भाई इसने एक अटैकिंग आइडेंटिटी लाई है, एक आइडेंटिटी लाई है इन द फर्स्ट प्लेस एट फियोरेंटीना, जो नहीं थी बहुत सालों से. Definitely. और ओवर द लास्ट 3 इयर्स हम सबने उसको बैठ के क्रिटिसाइज किया इटालियानो को, अरे यार डिफेंडिंग नहीं करती इसकी टीम अच्छे से, ये वो. बट स्टिल, टू हिज क्रेडिट, वन कोपा इटालिया फाइनल, द सेकंड कॉन्फ्रेंस लीग फाइनल नाउ. मतलब लीग में भी Yeah. अगर आप हिस्टोरिकली भी देखोगे तो फियोरेंटीना हमेशा टॉप 8 टॉप 7 में आती है. टेक्निकली उसने वो अचीव कर दिया, फर्स्ट सीजन 7, बाकी 2 सीजन ये इंक्लूडिंग 8th, राइट.
तो क्या क्या लेगेसी छोड़ी है और तू व्हाट डू यू थिंक ऑफ हिज जर्नी सो फार यार, इन ब्रीफ क्या लगता है तुझे? Yeah, like so. Yeah, hi everyone. So I think that like you rightly said, Fiorentina was the most random team I used to watch right in Syria. Like they were so random. You will never know कि इस मैच में वो लोग 5 goals मारेंगे or it will be just a plain nil-nil draw. Like it was always fun to because it was very unfunny like to watch them, right? And like they were in the banter era, they were almost there for relegation. And if we go back a little like 2 decades पीछे जाते हैं, so they were like they were bankrupt as well, they ceased to हम्म, exist. And हम्म, it was such a horrible thing for the people of Florence हम्म, who were just dying and crying to make the club rebirth again, and all those हम्म, stories we have heard. हम्म, And from there coming all this way, but at least like we said, we are now trolling them as Italianos Fiorentina. So at हम्म, least there's an identity now, right? Like we can say ki ha ek style aaya, एक हाँ, something that came with the club. And they are really known for their attack now. Like हम्म, it's impressive to see them play. It's a very fresh breath of football as well. हम्म, Because पहले हम बोलते थे just big six teams, then Atlanta का addition हुआ, now Fiorentina is हाँ, also pushing for that. So now हम्म, we can see our 8 हम्म, teams having a good like absolutely, battle it out every time, not just for Scudetto but for the European spots as well. And हम्म, Fiorentina has been a regular name from last 3 years in the same fight as well. They have been defeating big teams. They have a हम्म, knack to defeat Napoli almost every year. उनसे तो उनका अलग ही एक relation है, right? They defeat them every year and they break their hopes also. So yeah, like kudos to Italiano. Like I still think there are a lot of things he could have done right, which he didn't. There's हम्म, some flaws he had, but I would say 60% it has been good. 60 हम्म, 70% he has बराबर done a right job. 30% thoda hai, but I think that's with every coach, right? We are बराबर fans. तो सबके एब्सोल्युटली साथ हम थोड़ा करते नहीं बराबर है। आई थिंक यू सेड इट वेरी वेल कि आइडेंटिटी दी है, जैसे हम बार बार बोल रहे हैं। और जैसे तूने उसके अटैकिंग ब्रांड के बारे में बोला, फॉर एग्जांपल तू देख यार, सेरिया में सेकंड एवरेज पोजीशन है। आई होप अगेन दिस इज विजिबल। हैं. फ्योरेंटीना सेकंड 58%। एंड आई नो पोजीशन इज नॉट एवरीथिंग, ये वो मैं भी जानता हूँ, बट द थिंग इज एक पॉइंट पे फ्योरेंटीना ये सब न्यूमेरिकल्स में कहीं नहीं दिखती थी। ऑल द Yeah, ओनली रेलेवेंट नंबर फ्योरेंटीना के साथ एसोसिएटेड रहता था 16th या 17th प्लेस इन द लीग टेबल। वो भी लास्ट yeah. लास्ट डे पे दे यूज्ड टू सर्वाइव एज कौस्तुभ सेड। सो just to add my 2 cents here on this key, matlab, as you guys rightly said यार, ये club they before Commisso, Rocco Commisso as the owner, जो भी उसके बारे में आप सोचो, as an outsider, because उसकी आदत है कि बाकी क्लब्स को, बड़े क्लब्स को क्रिटिसाइज करना है, बी इट यूवेंटस, इंटर, एसी मिलान, सबकी लेता है वो उसका आदत है। बट ही हैज स्टिल एटलीस्ट डन अ डिसेंट जॉब, आई वुड से। मतलब मैं कौस्तुभ भाई से स्ट्रीम के पहले वही बात कर रहा था कि उसने इन देयर ही इज इन्वेस्टेड इन देयर न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग फैसिलिटी। एक नई पूरी ट्रेनिंग फैसिलिटी बनवाई है, ठीक है, चलो, ही कुड हैव मे बी थोड़ा और क्रिएटिव बन सकता था, मार्केट पे थोड़ा बेटर पर्सनल हायर कर सकता था टू बैक इटालियानो। बट अदर देन दैट उसने फियोरेंटिना की पॉपुलैरिटी यूएसए में बढ़वाई है यार। मतलब स्पॉन्सरशिप देखो, उनका Definitely. स्पॉन्सरशिप मीडिया कॉम, उसकी ही कंपनी, जिससे उनको ज्यादा Mediacom. पैसा आता है, मोर दे अर्न मोर देन समवन लाइक इन इंटर फॉर एग्जांपल। सो दे हैव स्टफ लाइक टू बैंक ऑन, जो पहले हमें दिखता नहीं था। हम लोग को लगता था यार फियोरेंटिना, एवरी टाइम यूज्ड टू थिंक ऑफ द फ्योरेंटीना ऑफ द पास्ट, नॉट द प्रेजेंट। अभी आप देखते हो एटलीस्ट Yeah, लोग आर्टिकल्स लिखते हैं उनपे, देयर आर पीपल टॉकिंग अबाउट देम, तो उनको वो रिस्पेक्ट तो मिलती है थोड़ी, एंड आई अग्री विद दैट। एंड द जर्नी आई वुड से हैज बीन गुड। मैं बहुत, आई थिंक फेमसली ऑन आवर शोज आई हैव बीन वेरी क्रिटिकल ऑफ द गाय, बट आई थिंक नाउ दैट थोड़ा मैं okay. रेट्रोस्पेक्ट में, इफ आई लुक बैक, एंड वी नो दैट द फ्योरेंटीना जॉब बहुत टफ है ये जॉब, एंड आई थिंक उसने he's done a good job. I will give it to him. मतलब कोपा इटालिया फाइनल, कॉन्फ्रेंस लीग फाइनल पहुंचना विद मिनिमल बैकिंग, नॉट द बेस्ट डिफेंडर्स, एक डीएम नहीं हो। टैक्टिकली तो हम लोग गेम ब्रेक डाउन करेंगे, उस स्क्वाड में आप देखो एक डिफेंसिव मिडफील्डर, फील्डर नहीं है यार, एक डिफेंसिव मिडफील्डर नहीं है बट ढंग का। तो आई गेट इट। सो इसकी सब गलती नहीं, इज डन अ रिस्पेक्टेबल जॉब, एंड वेरेवर ही गोज नेक्स्ट, गुड लक टू हिम। अभी थोड़ी देर पहले उसकी लिंक्स टोरिनो के साथ आ रही है, डीमार जो बोल रहा है। सो वाओ, वेरी Wow. इंटरेस्टिंग। सो देखते हैं, लेट्स मूव ऑन यार। मतलब हमने आइडेंटिटी के बारे में बात की, वो टैक्टिक्स में थोड़ा और डेवलप, सॉरी, वील डेल्व इनटू इट। बट Kostu, I want to talk about one thing. Like, I want to ask you, what does this final as a whole mean for Fiorentina? We spoke of Italiano, okay, but what do you think it means for, मतलब, Fiorentina as a club, or because especially जो उनकी tragic situation होगी where their CEO Joe Barone passed away tragically at a young age technically, मतलब, he's just 54 if I'm not wrong, and he passed away tragically, and it is a shock to Fiorentina because अभी आप अगले season देखो,
उनके पास वो सीईओ रोल में कोई नहीं है, उनका ऑब्वियसली कोच जा रहा है, उनका स्पोर्टिंग डायरेक्टर बड़ी सो भी जा रहा है, तो बहुत बड़ी चेंजेस आने। So what does this final mean to them as a club, not just historically or whatever, but going forward here, what can this trophy help them achieve? हाँ, सो आई थिंक अभी हमने मेंशन करा कि काफी जो उनका करंट स्पाइन है मैनेजमेंट का, वो Hmm. चला जाएगा. जो वरुण ऑब्वियसली नो लॉन्गर विद अस. बट Hmm. हाँ, आई थिंक लास्ट सीजन जब वो लोग फाइनल में पहुंचे थे अगेंस्ट Hmm. वेस्ट हैम वन द टूर्नामेंट एंड उनके लिए, एंड आई वोंट कंपेयर देम, Hmm. बट वेस्ट हैम आर अ बिगिश क्लब. Hmm. They're a prominent Yeah. club. We know the name. We Hmm. respect what West Ham are as an entity. Hmm. Hmm. उस वजह से they could establish themselves that they are still very much up there, even though top six Premier League से जितना अच्छा ना हो वो लोग. Hmm. But similarly, Fiorentina have never been a bad club. अभी हमने काफी बात करी. Fiorentina have never been um, कि ऑब्वियसली अभी रिसेंटली वो रेलेगेशन के अराउंड थे काफी. व्हेन मॉन्टेला रिटर्न वापस से, तो वो बहुत वियर्ड सा वो एरा था कि पहले अनबीटन रन था, फिर विनलेस रन था, और फिर मॉन्टेला लेफ्ट. वो बहुत वियर्ड सा एरा था. Hmm. सो इट विल, आई थिंक, एक ऐसा रियलाइजेशन होगा ग्लोबल स्टेज पे Hmm. कि फ्योरेंटीना आर अ फोर्स. Hmm. इफ नॉट अ फोर्स देन दे एटलीस्ट आर समथिंग. Yeah. वेयर Yeah. मतलब कुछ तो है. Even if they go on to even if they dip next season or something. And I Oh. think, wait, if say they win the Conference League, Hmm. they will all of a sudden become a very appealing Hmm. entity to potential players or potential CEOs or potential sporting directors, Yes. Yes. which is Definitely. um, I think financially भी काफी help होगी, because say if I'm a sporting director, Hmm. and when I'm looking for a new role, and Fiorentina have recently Conference League जीती, then and I'll be looking at Fiorentina because firstly पैसा है, and we see कि Fiorentina ने एक specific type के player sign करे हाँ. recently, हाँ. and उनका Right. because वो अमेरिकन क्लब हैं, तो it is likely कि इटालियानो के बाद जो मैनेजर आएगा वो सेम आइडियोलॉजी का होगा, सेम आइडियाज होंगे. Hmm. तो एक अश्योरेंस होगा कि आई हैव मनी टू स्पेंड, एंड देयर इज अश्योरेंस कि हाँ. यहाँ स्टेबिलिटी है. Hmm. कि if I go there, I'll not be hounded out like Hmm. whatever, like maybe Thiago Pinto at Roma. Hmm. वो आई थिंक एक अलग अलग केस है. हाँ. बट एक Yeah. अश्योरेंस होगा कि if I join them, they'll be a club where I can grow and I can help them grow as well. Exactly. And पैसा भी होगा. और कौस्तुभ, आपने ये अच्छे से बोला, बिकॉज टू ऐड टू योर पॉइंट हियर, मतलब यूथ लेवल पे दे डोंट हैव अ बैड टीम नेसेसरी. मतलब फॉर एग्जांपल उनकी Yeah, जो अंडर Yep. 19 टीम है, दे आर सिनोनिमस विद विनिंग yeah. द कोपा इटालिया एंड द सुपर कोपा फॉर द लास्ट 3-4 years constantly अंडर अ कोच. दे आर कंसीडरिंग देयर फॉर्मर प्लेयर अल्बर्टो एक्विलानी, Yeah. ऑफ कोर्स. तो वो भी है मतलब Yeah. बिल्डअप करने के लिए, जैसे आपने बोला, दैट विल बी वेरी यूजफुल. एंड द थिंग इज वही, एक तो यूरोपा लीग में आ जाएंगे, बहुत बड़ी बात है. एंड Yeah. फ्योरेंटीना एज played Europa League ages ago. Of course, it's been a few years now. So, मतलब पैसा भी आ जाएगा, and in the new format, obviously there is a bit more money. And Florence again, again it's a good club to be at. Fiorentina, मतलब we have seen a lot of young talent go there. अभी आप And I देख. think एक also ये भी फैक्टर है कि हम अगर कोई फ्योरेंटीना फैन कैसे बनेगा. हाँ. आई थिंक जो मेनली फ्योरेंटीना फैंस, आई थिंक मेरे लिए भी जो फ्योरेंटीना का अपील है, दैट्स इवन दो आई डिडंट वॉच इट लाइव, अपना 90s में पार्टी गोल एंड But देन Party रूई yeah, goal. कॉस्टा, yeah, Yeah. थोड़ा बहुत yes, योवेटिच एज वेल, व्हिच इज आयरॉनिक Juventus, क्योंकि योवेटिच yes, खेलेगा हाँ, ओलंपियाकोस के लिए, Juventus उस पे आएंगे. फ्योरेंटीना Yeah. अगेंस्ट लिवरपूल वगैरह Yeah, वगैरह. Yeah. yeah, तो वो एक सेंस ऑफ अपील है जिस वजह से फैंस गेट अटैच्ड टू अ टीम. हम हाँ. देखते हैं अटलांटा को इंडिया में सपोर्ट करते हैं लोग. हाँ, वी नो फ्योरेंटीना को. अटलांटा फैंस. हाँ, एंड वही फ्योरेंटीना वही आइडेंटिटी बिल्ड करने का ट्राई कर रही है. मतलब ऑब्वियसली उनको और उनके पास उतनी अटलांटा जितनी डेप्थ नहीं है स्पोर्टिंग डायरेक्टर लेवल पे और ये वो. बट देयर इज समथिंग देयर जो आप देख के बोल सकते हो कि यार ये क्लब कर सकती है शायद. बट मूविंग ऑन यार, देखो आज बोनावेंचुरा अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में था. ही सेड अ ट्रॉफी इन फ्लोरेंस वुड बी रियली नाइस. इट्स मोर डिफिकल्ट ओवर हियर. And Difficult. the last cup was won more than 20 years ago, and you can feel the desire of the fans. And उसने बोला कि वही, I had already noticed the passion and attachment as an opponent when I put on this shirt. I realized that tomorrow we'll have a new chance, and we hope to win, of course. So
आई थिंक ये जो हमने जो भी डिस्कस किया कि उसने सम अप कर दिया है, और उसने ये बोला कि the strategy for tomorrow's game is that we'll go into detail about the individuals, but I think that won't change. But because obviously at the end of the day, these games you have to play to the occasion, and Fiorentina का I think वही बड़ा टेस्ट रहा है कि बड़े occasions पे ऑफ लेट थोड़े कोलैप्स हो गए अनफॉर्चुनेटली लास्ट सीजन का जो कॉन्फ्रेंस लीग फाइनल और द कोपा इटालिया फाइनल दोनों दोनों क्लोज थे। बट इटालियानो तब से थोड़ा अडेप्ट कर चुका है, हम टैक्टिक्स पे आएंगे। बट वही दोस्तों आपके लिए थोड़ी और चीजें बताने के लिए देखो, फ्योरेंटीना चैंपियंस लीग रनर अप रही है 56 1956 57 में, यूरोपा लीग रनर अप इन 1989-90 सीजन, एंड तब से रियली, और ऑब्वियसली कॉन्फ्रेंस लीग रनर अप लास्ट सीजन। लास्ट ईयर। अगर वही और कोपा इटालिया तो लास्ट टाइम यार देयर वाज इन 2000 2001, मतलब बहुत टाइम हो गया यार ट्रॉफी जीत के यार। और मतलब दे रियली नीड दिस एज अ क्लब आई फील। जो रोमा ने स्टेप लिया, जो वही हम लोग बोल रहे थे, जो एटालांटा ने भी अभी ले लिया, यू नो, दे Yeah. रियली टू टेक दैट स्टेप। सो आई विल कम टू मित्तुल यार नेक्स्ट। मित्तुल अभी हमने देख लिया ओवर द लास्ट 2-3 years का स्पेल देख लिया हम लोग ने, व्हाट इट मींस एंड ऑल वी हैव डिस्कस्ड। नाउ लेट्स टॉक अ बिट अबाउट दिस सीजन फॉर फ्योरेंटीना, ठीक है। फिर से 8th प्लेस फिनिश लॉक इन हो गया है, ठीक है। देयर इज नथिंग लीग वाइज टू प्ले फॉर देम, ठीक है, एक गेम बचा है अटलांटा के अगेंस्ट, बट हारो जीतो उनका पोजीशन तो नहीं बदलने वाला। बट व्हाट डू यू मेक ऑफ व्हाट दिस सीजन हैज बीन फॉर देम? मतलब कहीं तो मैं, आई नो द प्लेयर्स दे हैव आर नॉट रियली ग्रेट, आई गेट इट, बट कहीं तो मैं थोड़ा और एक्सपेक्ट कर रहा था फ्योरेंटीना से यार। आई Definitely. और जस्ट टू Yeah. जस्ट बिफोर आई आस्क यू, देख, आई नो द अटैक हैजंट क्लिक, निको गोंजालेज अकेला कर रहा है, वो सब टच अपॉन करेंगे, डिफेंस भी इतना खास नहीं, बट इसलिए मैं इटालियनो को थोड़ा क्रिटिसाइज कर रहा था कि लाइक देयर वर सम टीम्स फॉर एग्जांपल लाइक अ लाजियो में भी आई फील वो ट्रम्प कर सकता था, थोड़ा एक और पोजीशन हायर लेके जा सकता था, आई जस्ट फील पर्सनली। तो क्या लगता है, बिकॉज देख, मतलब आई स्टिल फील रिस्पेक्टेबल फिनिश है वो फ्योरेंटीना की हिस्ट्री में ही है, वो टॉप 8 स्पॉट्स जो आप लोग बोल रहे हैं। बट व्हाट डू यू थिंक हैज, how do you rate their season? For you, what are the highlights and what are the, the not so many good moments? और तेरे लिए कौन प्लेयर स्टैंड आउट हुआ है ये सीजन फ्योरेंटीना के? Yeah. सो लाइक आई एग्री विद मोस्ट ऑफ योर पॉइंट्स, क्योंकि मैंने भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन किया था। थर्ड हाँ सीजन आ गया है, राइट? लाइक हाँ इज बीन नाउ वही फॉर द थर्ड सीजन। ही वही नोज द लीग, ही नोज द टीम, ही नोज द सिस्टम, ही नोज द स्टाफ एज वेल, सब कुछ। लाइक नाउ ही इज वेरी कंफर्टेबल विद इट, वही एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अ लिटिल बिट बेटर देन दिस, क्योंकि हाँ उसके पास आई थिंक स्टिल थिंक की क्वालिटी इतनी तो है। लाइक यू हैव बेल्ट्रान, यू हैव सॉटिल एज वेल, एब्सोल्युटली यू नो, यू हैव गोंजालेस, जैक बोनावेंचुरा यार, ही इज बीन लाइक, उसका भी रेनेसा हो गया जब से ही इज हाँ बीन एट फ्योरेंटीना अगेन। हाँ तो लाइक ऐसे प्लेयर्स हैं लाइक हु वर लिंक्ड एंड हु वर टिप्ड फॉर बीइंग द नेक्स्ट जनरेशंस, लाइक उनके डिफेंडर्स को भी पीपल वर रेटिंग, कॉमिसो वाज रेटिंग बेसिकली 50 हाँ 60 या 80 मिलियन अराउंड, राइट? हाँ तो या राइट, और हाँ आधे से ज्यादा तो हमने ले ही लिए यूवेंटस हाँ ने जमीन में थे हाँ सो हाँ एनीवेज वी थॉट कि दे वुड डू बेटर, राइट? क्योंकि if you see this season, Napoli has fallen off so badly, या right? या And Bologna, if Bologna can do it, like Bologna capitalized on it for हाँ sure. So I thought कि Fiorentina would do it more than them, right? Because last year was also like, at the end they were falling apart. They were like, being tore apart. But there were many games जो Fiorentina ने points drop किए, and it's very annoying to see them doing it. But वही है, like they don't have this consistency. They get a lot of chances in the games, and बहुत they वेस्ट होते tend to miss it. And हैं। then their defense is wide open. Like, in a snap, you see them, running, or already the players have beaten them, and Terracciano is left, on a one-on-one situation, and he usually concede that. So ये सब थोड़ी सी चीजें हैं जो आई थॉट ही शुड हैव डन बेटर, बिकॉज थर्ड सीजन में आई थिंक यू डोंट मेक बेसिक मिस्टेक्स, आप थोड़े टफ मिस्टेक्स करते हो। लाइक नाउ वी एक्सपेक्ट हिम टू मेक टैक्टिकल फक अप्स, राइट? लाइक वी इमेजिन हिम टू डू बिग टैक्टिक्स में कुछ उसने गलत सब्स्टिट्यूट्स किए हो, ऐसे गलती। बट या बेसिक मिस्टेक यू हैव, द लीग एंड सीरीज, नॉट लाइक, इट्स नॉट समथिंग दैट यू हैव टू लाइक, it's not a blueprint जिसका पढ़ के पूरा जाओ। It's one game at a time. You go every game, you give your heart there, and you try to win it. Yeah. So yeah, I think at least I was expecting कि अब ये without winning conference Europa League के range में होते आज, तो that would have been a realistic finish for them. But Yeah. yeah, kudos to them still in the cup And run. They had but a but great cup run. बट Yeah. मुझे तेरे ओपिनियन में बता यार, तेरे लिए स्टैंड आउट प्लेयर्स कौन रहे फियोरेंटीना के लिए, जस्ट फॉर द ऑडियंस आल्सो, सो दैट दे नो कि तेरे लिए Yeah. स्टैंड आउट, और दोज हु हैव परफॉर्म्ड बिलो पार फॉर यू, लाइक तेरे दिमाग में जो भी Yeah. आता Below par, like I mentioned, इनके attackers, I think I expected more than Beltran, है। Sotil.
right? बराबर, Enzola, like all the Icone, right? You know, all these players. absolutely. But if you go on the mid, I think mid में Bonaventura was one of the standout player. Apart from that, Arthur also. Arthur has हाँ, like he's usually invisible on the pitch if you see, हम्म, but that makes him a great player. If you are invisible on the pitch, that means you are doing your work. Arthur, yeah, Like you are, you know, being marking players, you are trying to break the attacks, counters. yes, So and he has stepped up on some very important games, even though he scored penalties mostly. But when his team needed him the most, he scored that, he converted that. So ठीक है, like his goal contribution is not that much, but yeah, he's still there. Or I have grown a little bit respect to Terracciano as well. yeah, fair enough. Like Thank you. he has also grown in the you know, like the goalkeeper role as well. He has stepped up so much this season. I've seen him, you know, making some great saves this time, which he usually, you know, let it go in the past. So yeah, these were few players. हाँ नहीं मतलब पिएत्रो तेराचियानो का तूने एक सही बोला. फॉर एग्जांपल वो रेटिंग अभी मैं फुटमॉप पे सिर्फ पुल अप कर रहा हूँ विजुअल्स के लिए, रेटिंग लो दिखेगी, बट यार आई थिंक कॉस्टो विल आल्सो जनरली एग्री कि बहुत सेव्स किए बंदे ने. आई वाज रीडिंग दिस स्टैट यार अबाउट देम की द थिंग इज वो लोग ना लो क्वालिटी चांसेस ज्यादा मतलब नहीं कंसीडर करते, बट जो भी चांस वो लोग कंसीडर करते हैं ना उनके हाई प्रेस की वजह से वो उसकी एक्सजी ना मित्तुल बहुत हाई होती है. इतना Yeah, चांसेस कंसीडर नहीं करते फनीली इनफ, बट दे जो भी चांसेस कंसीडर करते उसकी एक्सजी बहुत ही हाई होती है. kudos to their defending and their clearance थोड़ा इधर उधर, but kudos to this man Pietro Terracciano जो बहुत सेव करता है. He has, as you said, really stepped up. वो वही लोग बोल रहे थे ना, yeah. वो मीम आप देखते हो ना यार, वो that Grim Reaper knocks on the door and जो भी नया Yeah, गोलकीपर पिएत्रो सॉरी फियोरेंटीना साइन करती है वो बेंच हो जाता है इसके वजह से. अभी उन्होंने ओलिवर इसकी वजह क्रिस्टेंसन, से. हाँ ओलिवर क्रिस्टेंसन साइन Yeah, किया, देखो क्या हुआ उसके बाद, राइट. सो फनीली yeah. ना वही चीज यार लाइक. इवन आई थिंक यू ऑल्सो शोन सीरिया के स्टैट्स अभी, तो उसमें भी आई हाँ वाज नोटिसिंग क्लीन शीट्स में भी दे आर थर्ड फोर्थ बेस्ट इफ आई एम नॉट Ha, रॉन्ग. you're right. I'll pull that up. But या also to Mitul's point, just to touch upon a few more key players for you guys here. देखो अब Lucas Martinez Quarta, surprisingly enough, he's a defender, but I think he has around 8 goals for Fiorentina. तो वही आपको बताती है Fiorentina की प्रॉब्लम. एक तो अटैकर्स इतने स्कोर करते नहीं है, जैसे लुकस बेल्ट्रान. देखो अब जैसे देख रहे हो निको गोंजालेज जो नॉट इज नॉट अ नेचुरल स्ट्राइकर, आउट वाइड ही खेलता है राइट विंग पे या फिर एज एन इनसाइड 10. ही इज देयर वन ऑफ देयर हाईएस्ट स्कोरर्स. बोनावेंचुरा फ्रॉम मिडफील्ड. बाकी के स्ट्राइकर्स आपको कहीं भी हाईएस्ट रेटिंग में नहीं दिख रहे बिकॉज देयर जॉब इज टू रियली स्कोर एंड दे डोंट स्कोर. एम्बाला, एंजोला, लुकस बेल्ट्रान, बेलोटी. तो इटालियनो के लिए इस सेंस में टफ हुआ है कि मैं कैसे इनसे इनकी ऑप्टिमल लेवल निकालूं, राइट. तो kudos to players like as you said Lucas Martinez, Quarta, Gonzalez, Bonovic. I have also been impressed by Duncan थोड़ा I guess Costo because या ही इज नॉट रियली एसोसिएटेड विद चांस क्रिएशन. और मैं उसके मैट्रिक्स देख रहा था यार थोड़े कि बहुत उसने चांस क्रिएशन की तरफ कंट्रीब्यूट किया है सरप्राइजिंगली मेरे लिए. सो वेरी इम्प्रेस्ड हुआ है अल्फ्रेड डंकन एज वेल. एंड so moving on from some Fiorentina players, ये तो डिस्कस कर ली. Costo, I'll come to you before we close out Fiorentina थोड़ा. um, we discuss the players थोड़ा playing style we'll discuss later when we discuss where the game can be won or lost for either side. For you, if you had to अगर तुझे रेट करना है इस सीजन को आउट ऑफ 10, बिफोर ऑब्वियसली व्हाट हैपेंस टुमारो, कल का तो हम लोग अभी ऑब्वियसली नहीं बोल सकते, व्हाट डू हाउ वुड यू रेट इट सो फार एज ऑफ टुडे. एंड तू किसको रेट करता है इस सीजन में सबसे ज्यादा? इफ यू हैव टू पिक 3 पर्सनल फ्रॉम दिस क्लब, आई इंक्लूड द कोच, राइट, आई एम नॉट जस्ट इंक्लूडिंग प्लेयर्स. कोच अगर तेरे को रेट करना है तो सो किसको रेट करना है तुझे इस क्लब में? एंड रेटिंग आउट ऑफ 10 आई वांट फ्रॉम यू. I think as a whole, I would give them a 6. Because honestly, uh, last 2 seasons you were around seventh or eighth. The expectation is कि since you are in the third season of your development, you go a level up in the next season and potentially challenge for Champions League football or direct या फिर Europa League football के लिए compete करे. वो नहीं हो पाया. Which is again जो हमने बात करी कि वो एक drawback है उनका in general. So I think अगर even if they finish the sixth or something, वो मेरे को चलता. I mean, they can still qualify for the Europa League, but not because of the league position. I think league position is much more important than winning your knockout competitions. I mean, हाँ लोग कहते हैं कि we won this and that. It doesn't mean you've had a great season. अभी अगर फ्योरेंटीना ने कल कॉन्फ्रेंस लीग जीत जाए, यार it's an achievement for the club. Doesn't mean कि लीग में इतना ज्यादा impress कर रहा था. Doesn't take away the fact that you were mediocre to good in the entire season. So I think मैं 6 दूंगा. But when it comes to your
players की ratings, I think Terracciano, I really liked Arthur and Bonaventura. So I think Arthur का मैंने expect नहीं करा था. I think मैंने Arthur के बारे में उतनी बात नहीं करी because I mean probably because मैं Arthur का काफी ज्यादा बड़ा fan हूँ in general. तो क्योंकि वो अपना ball playing regista type player आराम से खेल सकता है. But I think off the ball उतना अच्छा नहीं है. But on the ball he's always been good. He's always been good. Yeah, he drops deep and he starts that play. Yeah. वही फियोरेंटिना का क्योंकि issue. उन्होंने Yeah, sorry, go ahead. Amrabat lose करा. And I agree, Amrabat wasn't your perfect defensive midfielder. But फिर भी Maxime Lopez आया. लोग expect कर रहे थे कि oh fuck, he's gonna be playing either as the deepest midfielder or as that advanced 8. कुछ तो खेलेगा. But आर्थर की वजह से लोपेज को चांस ही नहीं मिला. मतलब वो जनरली बेंच से आता है. मतलब उसका ऑब्वियसली डेवलपमेंट भी थोड़ा हिंडर हुआ है. बट आर्थर का मेरे को लगता है फियोरेंटिना को ट्राई करना चाहिए परमानेंट साइन करने का. आई डोंट थिंक होगा, बट वो टोरेरा जैसा सिचुएशन ही होगा. आई थिंक टोरेरा का जैसे आर्सेनल के साथ हुआ था. Yeah, correct. आई थिंक फॉर मी प्लेयर ऑफ द सीजन इज प्रोबब्ली आर्थर. I would give him a probably 8. ठीक है. Then Bonaventura, followed by Terracciano. Fair. 7 each, I think. Fair So enough. I think Arthur का, as we say, remontada in Spanish or remonta in Italian, काफी अच्छा लगता है मेरे को देख के, because I think he's always been a very cultured midfielder, जैसे हमें कहते हैं, who I think still has a very good future. I don't know England में होगा, कहाँ भी होगा. I hope टोरेरा की तरह टर्की ना जाए वो, but I hope सेरिया में ही रहे और top 5 leagues में ही रहे, because I really like him. And वो obviously अब Juventus जा रहा है. Juventus I think बेच देगी. So yeah, I think these are my top 3. Also, I agree with you. I think rating wise agree करता हूँ. और अगर अब थोड़ा टेक्निकल नोट पे देखो, उनके एक्यूरेट लॉन्ग बॉल्स पर मैच सबसे ज्यादा क्यों है? फनीली इनफ बिकॉज Italiano as a coach has realized कि Belotti, it doesn't offer much. तो उसकी hold up play पे ज्यादा ऑफर करता है वो. He pumps in those long balls so that Belotti can win the ball. थोड़े first touch से इधर उधर he springs the ball around so others can score. So ये थोड़े stats थे. Fiorentina के बारे में हमने थोड़ी बात कर ली. थोड़ा Olympiacos के बारे में भी बात कर लेते हैं before we take the last things. यार I'll stick to Kaustubh and then come to Mittul यार. For example, अभी यार Olympiacos के 4 coaching changes हो चुके हैं ये season. And it has been a very crazy season for them. मतलब obviously Greek Super League तो नहीं जीत पाए, but only 6 points behind. Funnily enough, final जो है Conference League की, उनके एक rival के स्टेडियम में AEK Athens, and obviously they finished above Olympiacos as well. और ग्रीक सुपर कप, ग्रीक कप में भी वो लोग राउंड ऑफ 16 में गए. यूरोपा लीग से गिर गए. यूरोपा लीग में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी. आई रिमेंबर दे गॉट थ्रैश्ड बाय फ्राइबर्ग एज वेल. एंड फाइनली कॉन्फ्रेंस लीग में आके बहुत क्रेजी परफॉर्मेंसेस के बावजूद दे आर इन द फाइनल. मतलब इंप्रेसिव सीजन यार. आई रिमेंबर, I'll pull it up, but what do you make of José Luis Mendilibar as a coach? Because he has a very interesting history if you want to bring it up. And just what do you think he is like? If you can briefly explain. Kaustubh? Sorry, was a question to me? Yeah. मेरे को लगा it was for Mittul. Yeah, I think अभी जैसे हमने बात करी कि the fact that you've had a bad league season. I mean, Olympiacos season hasn't been bad, but they're always closer to the top of the league, which hasn't quite happened this season. I think वो instability से हुआ. But I think Mendilibar, as we spoken podcast से पहले, he's always been a very good manager in your cup competition, be it Ibar. And I think Ibar में in general वो league में भी काफी अच्छा था. I think highest finish was 9. Sevilla में वो relegation से बचा के Europa League जिताया था last season. So I think वो again, it's that dilemma of whether does having a good run in cup competitions make sure that you've had a good league season. But I think Olympiacos के केस में the different thing is वो इतने ज्यादा unstable थे कि जो मिल रहा है उनके लिए चलता है. वो लोग अगर जीत गए they'll be on top of the world considering उनके sporting directors change हुए. I think a former sporting director has returned. I think वो मेरे को I think नाम नहीं याद आ रहा, but I think he has a Serie A background जो उनका current sporting director है. I think had a stint at Juventus and Lazio.
So I think वो काफी instability थी, and if they come out of that to win European silverware, which is what their under 19 team did, UEFA Also Youth did, League yeah. so I जीते वो think लोग. वो Youth League. Yeah. काफी बड़ा achievement होगी. ये हाँ. almost like Sevilla themselves last season, जो हम्म. Sevilla के साथ हुआ था, कि हम्म. वो crisis situation में थे, काफी players भी injured थे, I think. Mendilibar came to the club, relegation से बचाया, top half में लाया, won the Europa League. So I think वो अगर फिर से हुआ, वो I think वो प्रोफाइल क्या बूस्ट होगा मेंडलीबार का. I don't, अब पता नहीं वो आगे कहीं जाएगा कि नहीं जाएगा, but हाँ, for the fans हाँ. after such a weird and wonky season, वो it will turn into a memorable season altogether, Yeah. because And one thing, it Yeah. means a just lot चीज to में, Olympiacos as well. यस आई एग्री विद यू. एक तो एक चीज ये बताना चाहता हूँ यार, ओलंपियाकोस आज तक कोई यूरोपियन फाइनल में खेली नहीं है, बारिंग देयर यूथ साइड. Yeah. ऑफ कोर्स यूएफए यूथ लीग जीती ये सीजन इटालियन टीम को ही हरा के, यूएफए यूथ लीग में एसी मिलान को Milan. 3-0. फनीली Yeah. इनफ आई गेस दे जस्ट लव प्लेइंग इटालियंस. आई गेस मेंडिलिबार और ये कनेक्शन ओलंपियाकोस के. बट अगर थोड़े प्लेयर्स की बात करें यार, फॉर ओलंपियाकोस अगर आप दे सकते हो अयूबेल का भी दिस सीजन, ये तो 18 लीग गोल्स है सिर्फ, बट आई थिंक ही टचेस 31 गोल्स इन जनरल. डैनियल पोडेंस विंग पे Yeah. बहुत बड़ा थ्रेट रहा है, मतलब ऑन द ट्रांजिशन. इसलिए वो लोग ने एस्टन विला को भी ऐसे ही हराया था. कि द थिंग इज मेंडिलिबार के अंदर उनकी जो गेम प्ले है इज लॉट बेस्ड ऑन ट्रांजिशन, और बहुत इफेक्टिव ट्रांजिशन है आयूबेल का भी, पोडेंस और फॉर्चूनिस जिसके बहुत असिस्ट रहे हैं. एंड द थिंग इज बहुत इंटरेस्टिंग मार्केट रहा है उनका. मतलब व्हेन कार्लोस कार्वाहाल बिकेम देयर कोच हाफवे थ्रू, उसने पोर्चुगीज प्लेयर लाए, जैसे पोर्टो से डेविड कार्मो सेंटर बैक है, वो पोर्टो के हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव साइनिंग्स, और लोन पे आ गया वो. स्ट्रेंजली इनफ पोर्टो पे खेला नहीं, एंड ही इज आल्सो परफॉर्म्ड अंडर मेंडिलिबार. वो मेंडिलिबार का जो 4-2-3-1 जो है ना, दैट हैज वर्कड आउट अगेन. नॉट टू मच ऑफ अ हाई प्रेस और एनीथिंग, बट जो आउटनंबर करते हैं वो लोग हर एक पोजीशन ऑफ द ऑन द पिच. दैट्स वेयर फियोरेंटीना, आई विल उनको केयरफुल रहना पड़ेगा, बिकॉज फियोरेंटीना की डिफेंडिंग हम देख चुके काउंटर पे, जब उनको कोई काउंटर करता है इतनी खास नहीं, उनके सेंटर बैक्स आर नॉट द फास्टेस्ट. सो उधर ही प्रॉब्लम होगा यार. मतलब यू नो, एंड दे आल्सो हैव वन मोर प्लेयर इन मिडफील्ड यार, बाय द नेम ऑफ सैंटियागो हेजे. बहुत बड़ा वर्क हॉर्स है Yeah. उनकी टीम में वो. मतलब ही इज लाइक ऑलमोस्ट दिस बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर. ये रहा सैंटियागो Right. हेजे, बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर जो कनेक्ट करता है, बहुत परसिस्टेंट मिडफील्डर है, एंड डिफेंसिव एक्शंस में बहुत अच्छा है. सो दैट्स वेयर फियोरेंटीना विल हैव टू बी केयरफुल. मित्तुल तेरे पे आता हूँ यार, बिफोर वी मूव वी क्लोज दिस. Where do you think this game is won and lost? Because on one side you have a dangerous trio of attackers. Your Beltran, sorry, Beltran, बोल रहा हूँ, your Fortunis, your El Kabi, and your Podence, El and a good Kabi. midfield, yeah, Podence and El Kabi, and your Yeah. Santiago Hedze versus a decent defense versus a team whose attack is not clicking, but कर रहा है. मतलब वो लोग का somehow they do enough, they are so persistent कि some way or the other somebody scores. क्या लगता है, where is this game Yeah. won and lost? I think like pros and cons दोनों टीम के काफी clear है, right? One of the Olympiacos का pros we can say that it's in the same city. The final is in the same city, right? Although in the other rival zone, but yeah, they at least are familiar with the stadium. They play there every season, right? एक ही Athens के home में है. And they know the crowd भी ज्यादा होगा to have this the whole support backing as well, more than Fiorentina traveling fans. But like you said, it's their first final ever, right? The senior team का पहला final है, so I think the tension will be, of course, high. And we have seen them not being very consistent, although they have been good in the cup run. Otherwise, in the league, they have been bad. But I was like yesterday, I was watching a video that Conference League posted of all the 25 goals that Fiorentina has scored in conference. They have scored 25 goals so far this season. And I was noticing this. I was just counting. I started counting it. So out of those 25, they scored 11 goals from set piece. So this has been the key for Fiorentina. Yeah. So like they have been good in set piece so far, and Biragi has been exceptional. We know he's a great set piece taker. He did score a couple of free kicks as well in the season as well. And on the other end, Olympiacos, they are not very good in defending set pieces as well, right? Absolutely. But I think if I would have been an Olympiacos coach, I would have said go with the same plan that we have been going so far, because they are really good on counters. Like you said, transitions mein they're super smooth, right? So that is one way to beat Fiorentina, because that's basically Fiorentina's kryptonite, right? Because if you see,
that like they play with a high line, they are attacking so much, they're so engrossed in it. So the Hmm. moment they lose the ball, they are usually very vulnerable for the next, you can say, Hmm. Hmm. 10-20 seconds. And I think that is the most important time when Olympiacos can हाँ. actually take an advantage over it. But I Hmm. think so यही है कि लॉन्ग बॉल स्पैमिंग बहुत करती है Hmm. इटालियनो के अंडर फ्योरेंटिना, Hmm. and they have been hitting well because now they have ऐसे strikers who can हाँ. hold, who can play with the back on Hmm. the goal and who can flip on headers दे सकते हैं, ये सब कर सकते हैं. तो that is where I think you can break the Olympiacos whole Hmm. mentality. But it's going to be very tough because but who knows, two times a बट charm बट बट maybe. वही ऑन द फ्लिप साइड वही है जो हम ओलंपियाकोस के अच्छे प्लेयर्स के बारे में बात कर रहे थे, ये वो आपने तो बराबर ही बोल दिया कि फ्योरेंटीना वो स्पैमिंग देम प्रोबेबली इज द वे एज वेल, बिकॉज आई थिंक ओलंपियाकोस की बैकलाइन थोड़ी वल्नरेबल है. बट इन दैट Yeah. सेंस ऑल्सो एक चीज हम जानते हैं, कौस्तुभ भाई विल ऑल्सो अग्री, कि फ्योरेंटीना किधर सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, इज ऑन द ट्रांजिशन. यू नो बहुत बहुत वीक पड़ जाती है ट्रांजिशन में फ्योरेंटीना, और बहुत हाई एक्सजी चांसेस कंसीड करते हैं वो लोग. एंड आई थिंक दैट इज द क्रक्स ऑफ द इशू, क्योंकि you have on the opposition team players like Podence, again as we discussed, Fortunis, uh, and El Kabi, and then ऊपर अपने आपके पास एक बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर है सैंटियागो है. तो बेसिकली वो एबिलिटी है ओलंपियाकोस में क्विकली ट्रांजिशन करने के लिए, एज अपोज टू फियोरेंटिना के पास वो डिफेंडर्स नहीं है जो उतने क्विकली ट्रैक बैक कर सके. सो आई थिंक उधर ही मेन बैटल होगी, जैसे आपने बोला था मितुल. थोड़े प्रिडिक्टेड लाइनअप देख लेते हैं यार, as to what DiMarzio is saying. I'll just pull those up quickly, then we can get to predictions and finish this. Uh, हाँ. So, but yeah, I think प्लेइंग स्टाइल वाइज तो आई थिंक एक हाई ऑक्टेन गेम तो थोड़ा एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, बिकॉज दोनों साइड इतने सॉलिड तो है नहीं डिफेंसिवली. पर हाँ, जस्ट टू कम बैक टू दिस, अगर आप Yeah. देखो फियोरेंटीना की जो प्रेडिक्टेड लाइनअप है, तेराचियानो, डोडो जो फुली फिट है, ही वाज नॉट फुली फिट, मिलेंकोविच, मार्टिनेज क्वार्ता जो गोल स्कोरर है. बट वी नो कि ये दोनों सेंटर बैक की जो पेयरिंग है यार, कॉस्टो राइट, मिलेंकोविच और मार्टिनेज क्वार्ता बहुत एरर प्रोन है, स्पेशली मिलेंकोविच के रैंडम ब्रेन फेड्स होते रहते हैं. बेरागी जैसे Yeah. कॉस्टुम सॉरी जैसे मित्तुल ने बोला क्रॉस पैमर है. एंड फनीली इनफ आई थिंक मैं कहीं तो पढ़ा था कि टॉप 5 लीग्स में यूरोप में ही हैज द मोस्ट क्रॉसेस, इवन मोर अलोन देन 4-5 टीम्स. और Wow. that just tells you, and he's also the captain obviously. आर्थर है जैसे कौस्तुभ भाई ने बोला, वो डीप ड्रॉप करके प्ले मेक करेंगे. बोनावेंचुरा जो लॉन्ग रेंज शॉट्स लेके गोल मार रहा है, एंड he's playing well. निको गोंजालेस द स्टार मैन, बेल्ट्रान एज द 10, वो आउट एंड आउट स्ट्राइकर तो है नहीं. कुआमे लेफ्ट पे जो फिजिकली, और बेलोटी के साथ जो फिजिकली एरियल बॉल्स जीत सकते हैं. सो आई थिंक कौस्तुभ, ये लाइनअप यू अग्री, और डू यू थिंक देयर शुड बी अ चेंज ओवर हियर? Yeah, I think agree. I think, uh, as I said, uh, Lopez can't start. Bonaventura is obviously बोनावेंचुरा ने काफी बार दिखाया है कि यूरोपियन मैचेस में काफी इम्पोर्टेंट है, बिटवीन द लाइंस वो बहुत अच्छा खेलता है. तो आई थिंक या, एंड आई थिंक डोडो डोडो इज लाइक दैट. ही इज ईदर 9 out of 10 और 5 out of 10. हम्म. वो अगर उसका 9 out of 10 आ गया तो ही कैन विन योर गेम, हम्म. नॉट ऑन हिज ओन, बट हाँ, ही कैन हैव दीज ब्लाइंडर्स. हम्म. और वो अगर हुआ तो फियोरेंटीना को काफी हेल्प हम्म. मिलेगी. आई थिंक वही प्रॉब्लम कम्स डाउन टू कि फाइनल थर्ड में गोल नहीं आते. वो आई थिंक हिस्टोरिक प्रॉब्लम है इटालियन, नॉट हम्म. जस्ट हम्म. दिस ईवेंट. तो आई थिंक अभी हम स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि एस्टन विला भी हाई डिफेंसिव लाइन खेलती है हम्म. अंडर उनाई Yep. एमरी, जो हम्म. कि काफी बार एक्सप्लॉइट होती है. एंड वी नो व्हाट ओलंपियाकोस डिड टू देम. So, हम्म. and Italiano won't adapt. We know that he's a maverick. हाँ. वो कभी अडाप्ट नहीं करेगा, वो डीप डिफेंसिव लाइन में नहीं आएगा. हम्म. There's zero chance. हम्म. So, I think वो प्रॉब्लम है, which is why I think थोड़ा गोल फेस्ट भी हो सकता है. But I think हाँ, फियोरेंटीना का लाइनअप is pretty much that जो डिमार्जियो ने प्रिडिक्ट करा. डीमार्जियो ने डाला था. वील मूव क्विकली टू द ओलंपियाकोस लाइनअप. देखो एज दे लाइनअप इन देयर 4-3-3 और 4-2-3-1. रोलाकिस इन गोल, उसने पेनल्टीज भी बचाई अगेंस्ट फेनेरबाचे, सो बहुत अच्छा कीपर है. एंड ऑन द फ्लिप साइड इशू है कि पिएत्रो तेराचियानो इज नॉट नोन टू सेव पेनल्टीज, और फियोरेंटीना आर नॉट दैट वेरी गुड एट पेनल्टीज. निको गोंजालेस की अगर आप वीडियोस में जाके Yeah, पेनल्टीज की टेक्निक देखोगे तो बहुत अजीब है. मतलब इट्स ऑलमोस्ट जॉर्जिनियो टाइप, बट इवन वर्स.
और सेव हो जाती है 100% वो। तो रॉडनी है उनका राइट बैक, हु इज अगेन अ वेरी हैंडी प्लेयर। रेस्टोस है, कार्मो है डिफेंस में, ऑर्टेगा है। अगेन ऑर्टेगा इज अ प्रीटी डिसेंट प्लेयर, बट अगेन जस्ट इंजरी से आ रहे तो शायद थोड़ा वल्नरेबल होगा। वो जो पिवट है चिकीनियो और विचेंते इबोरा का, वेरी गुड ट्रांसलेशन फ्रॉम गूगल ट्रांसलेट डिलीशन पे। इट्स Yeah, एक्चुअली फॉर्मर सेविया प्लेयर विचेंते इबोरा, जो फेमस है, यूरोपा लीग जीत चुका है अगेंस्ट सेविया के साथ। सो देयर इज अनदर experienced player in there। विचेंते इबोरा है भाई लोग, इट्स नॉट डिलीशन। एंड सैंटियागो हेजे, जिसके बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं, जो द मेन बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर है। बहुत ओलंपियाकोस फैंस के मैं कमेंट्स देख रहा था जहाँ लोग वही बोल रहे हैं कि हेजे मोर देन द अटैकिंग ट्रियो इज द डिफरेंस, where the difference will be made, where the game could be won and lost। अगर if he's having a bad night तो शायद ओलंपियाकोस हार जाए। पोडेंस जो ही हम लोग बार बार राइट विंग पे बोल रहे थे, और ऑब्वियसली एल का भी मस्त the फिर cave. गूगल ट्रांसलेटेड द गेम, लाइक यू हैव टू Okay. गिव इट टू The cave. अयूब एल का भी है भाई, Caveman. फॉर्चूनेस्ट। I love Google Translate at Yeah. times of Fortunes। तो ये तो लाइनअप्स थी भाई लोग। we'll jump into predictions right away। जस्ट एक बार पेपर पे थोड़ी लाइनअप्स डाल देता हूँ। पहले पहले मैं कौस्तुभ पे आता हूँ यार। कौस्तुभ, क्या लगता है प्रेडिक्शंस तेरे को? कैन ओलंपियाकोस विन देयर फर्स्ट एवर यूरोपियन फाइनल, और एंड देयर फर्स्ट एवर सीनियर यूरोपियन ट्रॉफी, या फियोरेंटीना फाइनली एक यूरोपियन ट्रॉफी घर लाएगी, मतलब दिस amidst all the hardships they have faced? क्या लगता है? I think मैंने अभी बोला ना कि हम्म, I feel it could be a high scoring game. I mean, um, because I think Fiorentina goal खाएगी. There is Yeah, there's no literally, way they're keeping clean sheet. Yeah. हाँ, they can't keep a clean sheet. तो at least एक goal तो खाएंगे. And for me, मारेंगे भी. Because I think, uh, but I think वही, these are those European games जिसमें, especially final, you can't base your judgment of पहले क्या हुआ है. अभी Fiorentina have some players who have that. Bonaventura, for example. हम्म, I think Fiorentina win this 2-1, but मेरे को नहीं पता full time में या extra time के हाँ full time. ठीक है। So I would say probably because मैं चाहता नहीं Fiorentina हारे, मेरे को initially मैं ऑफ बोलने वाला कोर्स। था कि yo Olympiacos win this, फिर मेरे को थोड़ा दर्द हुआ, फिर मेरे को लगा नहीं Fiorentina win this because वो last season भी हारे थे, वो हाँ। stoppage time में bowen ने गोल मारा था. हम्म, That still hurts. I हम्म, don't want that again. नहीं Just for यार। that, I'd say 2-1 to Fiorentina because 3-2 नहीं हो सकता. Fiorentina can't score three goals. हाँ, पर So I who think do you 2-1 to think Fiorentina. which player will stand out फियोरेंटीना के लिए, अगर तुझे लगता है जो जीतेगा तो? अगर अगर वो लोग जीते तो कौन स्टैंड आउट करेगा तेरे लिए? एकदम ब्रीफली बता। I think Bonaventura. I think Bonaventura because I think वो last final में भी बहुत अच्छा खेला था. And I think अभी जैसा Mendilibar की टीम सेटअप करती हैं 4-4-2 में, they can be pretty deep. And उसमें बीच में स्पेस फाइंड करना बहुत मुश्किल होता है. Whereas Bonaventura is really good at finding space between the lines. So I think उसका रोल बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और वो अच्छा खेलता है. Fiorentina will score. बिफोर आई गो टू मित्तुल और हम क्लोज करें, आई थिंक मेरी प्रिडिक्शन होगी, अनफॉर्चुनेटली लग रहा है ओलंपियाकोस जीतेगी यार मुझे। मैं वही बार बार बोलते जा रहा हूँ कि आई थिंक ओलंपियाकोस एक्चुअली फेवरेट है ये मैच में। आई थिंक मित्तुल और मैं ये डिस्कस किए थे एक पॉइंट पे कि जब सेमीफाइनल आया था, क्लब ब्रूज भी हमें फेवरेट्स लगी थी, एंड फियोरेंटीना बहुत लकआउट हुई थी उस सेमीफाइनल के सेकंड लेग में, वेयर क्लब ब्रूज का एक काउंटर Yeah, अटैक yeah. था, देयर आई थिंक इगोर थियागो था 1v1 अगेंस्ट तेराचियानो, और वो स्लिप हो गया, एंड देन आफ्टर दैट फियोरेंटीना ने इतने चांस मिस किए ऊपर से। वो जो पेनल्टी भी मिला फियोरेंटीना को, क्रॉस बार हिट हुए थे. हाँ क्रॉस बार जो Yeah. पेनल्टी मिला था फियोरेंटीना को, आप बोल सकते हो इट वाज नॉट अ पेनल्टी बिकॉज ही वाज ऑलरेडी Too डाइविंग shady. इनटू द वही। तो नसीब तो था, एंड आई थिंक क्लब ब्रूज ऑलरेडी एक टफ चैलेंज था, एंड आई थिंक ये थोड़ा एक स्टेप अबव है। ठीक है, प्लेइंग स्टाइल मैटर करती है, ये वो मैटर करता है, बट आई हैव अ फीलिंग नॉर्मल टाइम में ऐसा लग रहा है एज आउट कर देगी ओलंपियाकोस 2-1। एंड आई थिंक फॉर ओलंपिया, बिकॉज आई हैव पिक्ड ओलंपियाकोस, मुझे लग रहा है द स्टार ऑफ द शो आई थिंक वंस अगेन विल बी अयूब एल का भी, जस्ट बिकॉज वो फियोरेंटीना को जब मैं खेलते हुए देखता हूँ, वो जो स्पेसेस छोड़ते हैं, जो हम बात किए हाई क्वालिटी एक्सजी रख देते हैं पीछे यार, इट जस्ट वरीज मी व्हेन अ प्लेयर लाइक एल का भी, व्हेन आई लुक एट हिम एंड व्हाट ही हैज टू ऑफर। फियोरेंटीना की जो डिफेंस कर नहीं पाती ट्रैक बैक, वही वैसे वो रन्स लेता है पेस के साथ इन द राइट स्पेस में, बहुत इंटेलिजेंट रन्स। सो आई थिंक अयूब एल काबी इज द स्टार मैन टुमारो, एंड ओलंपियाकोस विल विन द कॉन्फ्रेंस लीग। मित्तुल, लास्टली टू यू, क्या लगता है, क्या प्रेडिक्शन है, हु इज द स्टार मैन फॉर यू फॉर द विनिंग टीम टुमारो? Yeah. Mostly I'm realistic, right? हम्म, Giving practical thinking, but this time I'm just want to follow my heart. हाँ
this has been a beautiful season for Italian football. You know, Hmm. we have shown the world that, Italian football is returning to where they Hmm. was. Hmm. Almost all the teams did well. We have got the fifth UCL spot. Hmm. One of the teams from Italy has won Hmm. Europa as well, Atlanta. Now it's time for Fiorentina to bring another trophy home, right? Hmm. They deserve it. Last time also they lost, they came very close, but I think this time they are more experienced. They might not be repeating the same mistakes they have made before, right? हाँ And they are ये तो more बात है motivated, I believe, हम्म, because they know, they have been at the top and losing it. So yeah, they are more motivated, more hungry, I believe. ये तो So I बात है think it will go to 2-1, but हम्म, Fiorentina का defense history देख के I'm thinking it's going to be 2-2 and in extra time they score a third. हम्म, So I either 2-1 or 3-2, but I want them to win a trophy, हाँ and it would be a good season. It would be an icing on the cake for ऑफ Italian कोर्स जो football. हमने डिस्कस किया है इटालियानो छोड़ उड़ के जा रहे बट स्टारमैन कौन लगता है वो बता मुझे स्टारमैन Starman. हम्म Hmm. I think I would go with Biragi. बिरागी Because वाह last final, if you remember, West Ham हम्म fans हम्म didn't treat him well. Uh, हम्म we know, हाँ उस पे right? He got वेप injured पेन फेंकी also. थी वेप He पेन was, फेंकी थी जिससे yeah, उसकी डिफेंडिंग अफेक्ट हो गई थी ये तो correct. बात He बराबर was bleeding also, definitely. So हम्म I think it would life comes full circle, हम्म and so I think he will be stepping up this time. He will हम्म be showing, what he can give to the team. हम्म So I'll be going with Biragi and Terachan also. He has to step up. या आई एग्री यार मित्तुल भाई मतलब डेफिनेटली आई मैं भी होप कर रहा हूँ फ्योरेंटीना जीते जस्ट दैट मुझे लग रहा है रियलिस्टिकली नहीं होगा बट दैट्स अ वेरी गुड प्रेडिक्शन आई थिंक ये गेम ऐसा है ओपन एंडेड जैसे खुद मेंडीलीबार ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि ये लास्ट ईयर की रोमा की फाइनल की तरह नहीं होगा वेन ही वाज कोचिंग सेविया कि ये थोड़ा ओपन एंडेड होगा आई एग्री विथ हिम एंड इटालियन आल्सो सीम्स टू बी इन हाई स्पिरिट्स सो गाइस दोस वर आवर प्रेडिक्शंस ये प्रीव्यू था थोड़ा वीडियो का फॉर्मेटिंग अगर थोड़ा ऑकवर्ड लगे आप जब देख रहे हो तो ब्लेम मत करना बिकॉज स्ट्रीम यार्ड पे रिकॉर्डिंग करते समय बहुत इश्यूज थे तो हमें जूम पे शिफ्ट करना पड़ा और उधर भी उधर भी टाइमर रन आउट हो गया एंड वी हैव टू कंपाइल द टू वीडियोस सो जरा फॉर्मेटिंग को जरा ध्यान रख के डोंट माइंड दैट दिस इज आवर फर्स्ट रिकॉर्डेड फुल फ्लेज्ड वीडियो नॉट अ शॉर्ट राइट सो थोड़ा पेशेंस रखो वील वर्क ऑन द होल थिंग एज एंड व्हेन वी डिश आउट मोर content or thank you guys as once again for subscribing sorry for watching this video सब्सक्राइब करो लाइक करो शेयर करो कमेंट्स छोड़ो एक तो आपको क्या लगता है कॉन्फ्रेंस लीग के बारे में क्या होगा जो भी आपको क्वेश्चंस पूछने हैं आपको जो भी व्यूज देने दे दो और आपकी प्रेडिक्शंस भी दे दो उसके साथ आपको लगता है कौन जीतेगा कौन आपका स्टार मैन होगा ऑफ द नाइट और लाइक करो अगेन वन सा रिमाइंडर अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को एट कैल्चियो चर्चा कर लो वी आर एट 405 सब्सक्राइबर्स 400 का माइलस्टोन क्रॉस किया सो वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट और सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक हमारी प्रोफाइल बायो में भी है तो उधर भी आप चेकआउट कर सकते हैं और डोंट फॉरगेट टू फॉलो कौस्तुभ भाई ऑन ट्विटर उसके इन अर्लियर पार्ट ऑफ द वीडियो उनकी और मित्तुल भाई की प्रोफाइल दिखाई है मैंने मित्तुल भाई को भी फॉलो करो ट्विटर पे द कैल्चियो गाय सो या गाइस थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन और होपफुली कल फ्योरेंटीना जीते एंड या मे बी एक और अच्छी रात होगी कैल्चियो के लिए तो चाओ चाओ गाइस वेट फॉर आवर थर्सडे स्ट्रीम थर्सडे को भी स्ट्रीम होगी उधर तो हम बहुत अलग और चीजें करने वाले एंड ऑफ द सीजन अवार्ड्स कॉन्टे मिस्टर कॉन्टे एज ऑलवेज जो डिस्कशन में अपने आप को रखते हैं सो थैंक यू गाइस फॉर ट्यूनिंग इन एंड वील सी यू अराउंड फॉर द थर्सडे लाइव स्ट्रीम चाओ चाओ Sure.